अ वेरी गुड इवनिंग। आज मैं आपके साथ एक स्टडी शेयर कर रहा हूँ। पिछले 2-3 दिनों में कौन-कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा चले हैं और क्या उनमें कोई सेटअप था टू बाय और नॉट। ठीक है, तो ये मैंने एक लिस्ट रेडी कर ली है फॉर वेडनेसडे। ऑन वेडनेसडे कौन-कौन से स्टॉक्स 5% से ज़्यादा चले हैं या 5% से ज़्यादा गिरे हैं। सिमिलरली मैंने लिस्ट शेयर एक बनाया है फॉर थर्सडे। ऑन थर्सडे कौन कौन से स्टॉक 5% से ज़्यादा चले हैं और कौन कौन से स्टॉक 5% से ज़्यादा गिरे हैं। तो एक एक करके स्टॉक देखते हैं अभी और उसमें देखते हैं कि क्या कोई सेटअप था या नहीं था। तो सबसे पहले स्टॉक जो है वो है हेरिटेज फूड। अगर मैं हेरिटेज फूड में जाऊँ और यहाँ पर मैं एक ट्रेडिंग व्यू का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप है ना बार रिप्ले करके देख सकते हो बहुत इजीली। तो अगर मैं देखता हूँ परसों का, तो ये था एज ऑन ट्यूसडे, जिस दिन मार्केट में गिरावट आई, जिस दिन मोदी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, जिस दिन इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे उस दिन ये स्टॉक ऐसे दिख रहा था। ठीक है, तो क्या ये स्टॉक बायबल था नेक्स्ट डे? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी मूव कर चुका है। फ्रॉम इट्स बेस इट इज ऑलरेडी अप 22%, सो यू कांट बाय दिस स्टॉक आफ्टर द स्टॉक मेक्स अ मूव ऑफ 22%. So this stock was not a buy on Wednesday. Let's go to some other stock. Ceylon. Ceylon stock अगर मैं देखता हूँ ऑन वेडनेसडे, एक स्टॉक में एक बेस फॉर्म हो रहा है और इस बेस में मैं देखता हूँ इस दिन जस्ट ऑन ट्यूसडे, जिस दिन इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे उस दिन ये स्टॉक डाउन था 9.37%। यहाँ आपको दिखेगा 9.37%। तो आप देखोगे 9.37%। सो इज दिस स्टॉक टाइट जस्ट बिफोर द ब्रेकआउट? नो, so this stock was not a buyer. Let's go to next stock, TCNS Brands. अगर मैं इस स्टॉक को देखता हूँ ऑन ट्यूसडे, सी इट्स अ ब्रेकडाउन। किसी को नहीं पता यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन जनरली जब ऐसे ब्रेकडाउन हो जाता है तो एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि नीचे और एक दो सेलिंग आएगी, लेकिन वापस ये स्टॉक रिवर्स हो गया एंड इट मूव्ड अप, बट दिस वाज नॉट अ बायर। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, Veroc. Same Veroc, this stock went up, then there is a very high volume rejection over here, then a breakdown with a serious volume. ये देखो आप, ये स्टॉक डाउन था 8% एंड विद अ वॉल्यूम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 थी। सो वाज दिस बायबल? क्या आपको ये देख के लग रहा है ट्यूसडे को कि ये आपके रडार पे होना चाहिए था ऑन रजिस्टर फॉर बाइंग? आई डोंट थिंक सो। दिस इज नॉट व्हाट आई ट्रेड। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, एरो ग्रीन. सेम थिंग, Aerobeam breakdown, big 12% down day. Next day, it moved up, but this was not viable. Let's go to next stock, Infa. Same thing, base, stock down, big volume. So ये स्टॉक वायबल नहीं था नेक्स्ट डे। इसके बाद आइस मेक. नाउ दिस वाज अ सेटअप, गुड सेटअप, क्योंकि ये स्टॉक देखो यहाँ से बाइंग आई इसमें 41%, लेकिन 41% के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहे। ये खाली 3 दिन कंसोलिडेशन था, ये पूरा का पूरा खाली 3 दिन कंसोलिडेशन था। दिस इज वाई आई वॉज नॉट लुकिंग एट दिस स्टॉक। प्लस अगर मैं देखूं तो इसमें ऑलरेडी स्टॉक में बाइंग आ चुकी है फ्रॉम दिस लो। ये स्टॉक में देखो 10% ऑलरेडी चल चुका। ये देखो आप देखोगे यहाँ पर 11% ऑलरेडी चल चुका। तो जब ऑलरेडी 11% की बाइंग आ चुकी है एक दिन पहले, तो जनरली ये लो रिस्क सेटअप ये नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 11% नीचे से बाइंग आ चुकी है। यहाँ से हो सकता है यहाँ से स्टॉक अगर साइडवेज हो जाता और उसके बाद जैसे यहाँ से अगर ये स्टॉक यहाँ पर जाके 2-3 दिन और खड़ा हो जाता, ऐसा कुछ, उसके बाद यहाँ से बाइंग आती, देन इट वॉज अ गुड सेटअप। बट ऑन दैट डे this is not the setup that I like to trade, लेकिन स्टॉक चल गए तो कोई बात नहीं। लेट्स लुक एट नेक्स्ट स्टॉक, ISMT. बिग बाइंग 34%, परफेक्ट, बट इस दिन जस्ट बिफोर
ऑन ट्यूसडे ये स्टॉक देखो यहाँ पर 10% डाउन ऑन गुड वॉल्यूम्स। यहाँ पर आप देखोगे एक रेड मार्कर आ रहा है। रेड मार्क दिस रेड मार्कर कम्स व्हेनेवर द स्टॉक इज डाउन मोर देन 5% ऑन अ वॉल्यूम ऑफ 500K। मतलब whenever this happens, I am expecting कि स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, ताकि ये जो सेलर जो यहाँ पर सेलिंग किए हैं वो बाहर हो जाए। But was this a good setup on Tuesday to trade on Wednesday? No, this was not a good setup. Let's look at next stock, Imami. Now, Imami was a good stock, but this was very high volatile outside day kind of thing. It really made a big move over here, 20% move. Plus, I wanted this stock to go a little sideways here. अगर वही थोड़ा सा साइडवेज हो जाता, कुछ ऐसे ऐसे करके कैंडल्स बनते, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट आता, देन इट वाज अ गुड सेटअप। बट ऑन ट्यूसडे दिस वाज नॉट अ गुड सेटअप एज पर मी। लेट्स लुक एट नेक्स्ट स्टॉक, नेशनल एल्युमिनियम। सेम थिंग, वेरी हाई सेलिंग डे हियर। देखो यहाँ पर स्टॉक ऊपर जाके नीचे आया ऑन अ वेरी हाई वॉल्यूम, उसके बाद ये स्टॉक साइडवेज हुआ, फिर ऑन ट्यूसडे इट सोल्ड आउट, big selling with 19%, right? And next day it bounced back, but this was not the setup that I look to trade. Let's look at next stock, JSW Energy. So same thing जो बाकी stocks में हो रहे, stocks down 16% on Tuesday, so this was not a good setup, right? Let's look at next stock, अशिमा। ये शायद एक जितना मुझे पता है ये एक स्टॉक, ये cloth manufacturing sector. Okay, now stock was up 43%, then there is a selling, very good selling, and यहाँ पर स्टॉक में वेरी हाई वॉल्यूम डे है। यहाँ पर आप देखोगे एक रेड बार आ रहा है, so this is not the setup that I like to treat, so not a problem. Let's look at next stock, same thing, the stock was forming up good base। ये देखो बेस बहुत अच्छा है, यहाँ पर कोई भी जनरली हाई वॉल्यूम वगैरह नहीं है, यहाँ पर गुड बाइंग है। लेकिन just before the breakout, just before Wednesday, this stock was looking like this, and this is not the setup that I like to trade, so no. Same thing with sale, down. Geochit, same thing, no, this is not the setup that I like to trade. Same thing, this is not the setup that I like to trade. NCC, same thing, this is not the setup that I like to trade, but ये stock चल गया, so कोई दिक्कत नहीं है, चल गया चल गया। Let's look at next stock, Prestige. Same thing, big breakdown with a 13% down on Tuesday. Anup, same thing, same, this down day is 8%, 7.62%। अगर आप यहाँ देखोगे, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ ताकि आप यहाँ आप देखोगे, यहाँ देखोगे आप देखो 7.62% डाउन है, सो दिस इज नॉट द सेटअप दैट आई लाइक टू ट्रेड। नेक्स्ट स्टॉक धानु का, नो, बिग डाउन, 5.9% डाउन। गोकुल एग्रो, नो, टू बिग डाउन्स, यहाँ देखो दो दो रेड बार्स है, सो नॉट अ गुड सेटअप। क्या ये सेटअप यहाँ अच्छा था? यहाँ देखो, दिस इज व्हाट आई लाइक टू ट्रेड, stock up, stock went sideways approximately 13 days, and just look at this tightness, just look at this range, isn't very tight, isn't very tight, and just look at the volumes down there। क्या आपको यहाँ दिख रहा है कोई भी एक रेड वॉल्यूम जहां पर लग रहा हो कि सेलर्स आ चुके हैं वापस?
इट सिंपली लुक्स लाइक कि बायर्स ने स्टॉक बाय किया एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी, एंड व्हेन द स्टॉक गेट्स टाइट, दिस स्टॉक made a move, and this stock made a move of 16-17% in 2 days. This is what I like to trade. But here, this is not the setup that I like to trade. IB real estate, same thing, not my setup. This is not what I trade. PDMJ paper, same thing, not my setup. Century NK, not my setup. This is not my setup. Vijaya Diagnostic, this was down just 2%, but I didn't select it because 3-4 दिन पहले मेरे को यहाँ पर बिग रिजेक्शन दिख रहा है इस कैंडल पे। अगर आप देखोगे ये स्टॉक ऊपर गया था, फिर ये स्टॉक नीचे आ गया एंड इट वाज डाउन फ्रॉम द हाइज अप्रॉक्सीमेट 6.6% अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ जब आप देखोगे 6% दिख रहा है आपको, और वो भी विद अ बिग हाई वॉल्यूम। जनरली व्हेनेवर दिस हैपेंस आई जनरली लाइक टू वेट अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 days बिफोर ये जो ट्रैप्ड बायर्स है ये आउट हो जाए, बिकॉज व्हेन दिस ट्रैप्ड बायर्स get out of the stock, it becomes very clean. So this is why I was not, I didn't kept the stock in my watch list. But ये stock चल गया तो कोई बात नहीं। HG Infra, same thing. There is no setup. Do you see any setup here? No. Ashok Leyland, this is a FNO stock, तो ऐसे में ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ FNO, but same thing, big breakdown, very high volume. Balkrishna Industries, स्टॉक अप साइडवेज। अभी यहां तक सब कुछ ठीक था, ये पूरे के पूरे इस पोर्शन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन ट्यूसडे आया और उसने सब काम बिगाड़ दिया। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ट्यूसडे आया उसने सब काम बिगाड़ दिया एंड स्टॉक चला गया ऊपर। बट दिस इज नॉट द सेटअप दैट आई लाइक टू ट्रेड। जुबली फार्मा, same thing, down, big volume, and this day was down approximately 4.5%. So no. Gravita, गुड बाइंग, सब कुछ ठीक था यहाँ तक। अगर मैं देखता हूँ यहाँ तक एवरीथिंग वाज परफेक्ट, इट वाज सच अ क्लीन सेटअप। सी, बिग बाइंग, stock is going sideways over here, stock is going sideways and without any good volumes। यहाँ वॉल्यूम्स भी नहीं थे, लेकिन ट्यूसडे आया उसने सब बिगाड़ दिया, पूरा सेटअप खराब कर दिया। लेकिन क्या उसके बाद स्टॉक ऊपर गया? यस। सो नॉट अ प्रॉब्लम, छोड़ दो। अगेन डीलिंग, नॉट अ गुड सेटअप। इन कॉपर, नो। MMFL, नो। शारदा मोटर्स, नो। इसमें भी इस दिन ज्यादा, दिस डे इज डाउन 7%, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। लेकिन ठीक 4-5 दिन पहले सेम, यहाँ देखोगे आप तो दिस स्टॉक वेंट अप डाउन ऑन अ वेरी हाई वॉल्यूम एंड दिस वाज 4.5। ओके, दैट वाज ओके, 5% तक ठीक है। बट सेम जस्ट बिफोर द ऑन ट्यूसडे ब्रेकडाउन। नाउ Voltas, very high, very volatile on this day. Already buyers नीचे से 9% 10% ऊपर लेके आ चुके, तो आई थॉट इट्स एग्जॉशन। मैं चाहता हूँ कि मैं उस स्टॉक को बाय करूँ जहाँ पर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत कम हो, लाइक वेयर आई कैन कीप माई स्टॉप लॉस 2% 3% एंड आई कैन गेट अराउंड 20% 30%, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प माई इक्विटी कर्व टू मूव अप। लेकिन जब ऑलरेडी ये स्टॉक देखो 9% ऑलरेडी बाइंग आ चुकी है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 10% का बायर्स ने खरीद चुका है माल। उसके बाद यहाँ से कितना मैं एक्सपेक्ट करूंगा? हो सकता है और 10-20%। सो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले फॉर 10-20%।
लेकिन क्या ये स्टॉक अब अच्छा हो रहा है? ओवर हियर, सी, very nice setup now. Next week I'm going to keep this stock in radar. Big move, big move. Stock went sideways. Now it's getting just tight. And if यहाँ से अगर stock breakout करता है, then I'm going to buy. I'm going to keep Voltas in my radar next few days. I'm just adding this stock to my watch list. Okay, let's look at endurance. Endurance, same thing. मेरे को लगा this rejection from lows is approximately 7%. So not a good risk reward trade. ASL, same thing, no. JKIL, same thing, no. Dixon, same thing, no. Motherson, same thing, no. Tejas, same thing, no. This is a very good setup. लेकिन ये सेटअप यहाँ तक अच्छा था, यहाँ तक वेरी गुड सेटअप, बट जैसे ही ट्यूसडे आया, ट्यूसडे एक बिग सेलिंग ऑन अ वेरी हाई वॉल्यूम, सो आई डिड गेट स्टॉक इन माय रडार. 20 microns, no, this is not the setup that I like to trade. Indigo, no. Tega, no. Aarti Pharma, no. BASF, no. This is not the setup that I like to trade. Ace, no. No, no, no. Ace was a really good setup. Even here, ये देखो आप, selling very high volume buying. Isn't this a very high volume buying? ये देखो आप, on mark bar, just अगर मैं थोड़ा सा और big buying, stock went for correction, and then again there's a very big buying here. See, and then the stock goes sideways. This is tight, this is tight, this is just inside this, this is just inside this, this is just inside this. Now the stock is breaking out. अगर मैं अब यहाँ पर बाय करता हूँ स्टॉक को, तो I can keep just 2%, 3% stop loss and I can get a reward of against 2%, approximately it made a move of 30%. So that is 15-hour trade. But क्या ये स्टॉक, अगर मैं ट्यूसडे को देखता हूँ तो इट वाज नॉट अ गुड सेटअप. नो. NDL, no. Same thing, big breakdown. Muthoot Finance, no. This is FNO stock, very choppy stock kind of. I generally avoid FNO stock, so this was a good setup, but same, this was down 5%. So यहाँ देखोगे अगर आप तो ये 5% डाउन है, ये देखो 5% डाउन. So Anurag, no. Oberoi Realty, no. Phenolics Pipes, no. This was a good setup on this day. Okay, move sideways. Just look at these 2 days. Over here, ये buying, this went inside this went inside this. Now जैसे ही ये stop यहाँ पर breakout करता है, I look to buy, but ये fail हो गया. But on this day, this is not the setup that I look to trade. I need sideways move. Jindal Saw, no.
SOTL, no. Ram Ratna Wires, no. KCL, no. KCL, no. VDL, no. Glenmark, no. ITD Cementation, no. IIFL Securities, good buying, but this is not the day. This day was down at 14% on a high volume. Indian Hame Pipes, no. Just Engineering, no. Glaxo, no. This was down 6%. Peninsula लैंड लिमिटेड, ये रियल्टी कंपनी है शायद, लेकिन सेम थिंग, नो. पॉलीकैब, नो. आशियाना, नो. डीपी अभूषण, नो. दिस वाज अ गुड सेटअप टिल दिस डे. यहाँ तक सब कुछ ठीक था. Inside day, this is complete inside. This is also inside of this bar. So, but Tuesday को break down. Centrum, no. Cummins, no. Jindal Steel, no. PFC, ये तो बहुत ही बड़ा रिजेक्शन है on very high volume. This was down 23%. Venus Pipes, no. PTC, no. Sarla Poly, no. 4 big rejection days. यहाँ देखो, selling, this is selling, this is selling, this is selling. So no. Tex Infra, no. This ISGC Heavy Engineering, not a good setup. PGEL, same thing. Big breakdown. This play was down 10%. अब आप जब देखते हो यहाँ पर, आपको दिखेगा यहाँ पर स्टॉक was down 10%. Warback, same thing. Stock was down big. Ashoka, this big breakdown, but ये stock चल गया. Now it has crossed its high and all. It's a very good breakout. ये stock अगर in future कभी कहीं setup करता है, then I'm going to look for it. I'm going to trade it. कुछ नहीं, बस यहाँ पर एक छोटा सा sideways move दे on a low sideways move on a low volume, something like this, and volume भी छोटे छोटे हो, then I'm going to trade this breakout. But अभी इसको नहीं देखना है अपने को. SCI, no. SKF, same thing. This is not the sector that I like to trade. Supreme Industries, no. This is not the sector that I like to trade. But अभी ये stock, maybe next week or so, this is looking good. I'm just going to add this stock in my watch list. क्यों? क्योंकि this day crossed, now stock moved up, now this is just going tight. Just देखो कितना tight हो रहा है stock. अब यहाँ अगर मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आई कैन ट्रेड स्टॉक. दिस इज व्हाट आई लुक टू ट्रेड. ठीक है. SW select energy system, whatever, but same thing, no. This is not the setup that I like to trade. SW Solar, no. Dredging Corporation, no. Data Patterns, no.
Titagar, no. Cochin Shipyard, no. Same thing, breakdown. GRSE, no. Premier Explosives, same thing, breakdown. BDL, no. Adani Green, देखो अदानी में कितना बड़ा सेलिंग है ये. Isn't this a big selling? So, what is the probability that this is going to go down against going up? Let this high cross, then only we are going to look at क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा अगर 1800 है अभी 2000 के गोल्ड ले लेंगे. शिल्पा मेडी मेडी केयर, सेम थिंग, ब्रेकडाउन, नो. ट्रेंड, ब्रेकडाउन, बट ब्रेकडाउन तो नहीं है. दिस वाज डाउन ओनली 2%, बट ऑलरेडी बाइंग इसमें आई थी उस दिन 8%. सो not the setup that I like to trade. HFCL, no. LIC Housing Finance, no. Ambuja Cement, no. JK Bank, no. This was down 20%. Arvind Smart Space, no. GMR Infra, no. GE Shipping, same thing, big breakdown, so no. GIPCL, big breakdown. Tata Power, same thing, big breakdown. Oro Pharma, same thing, big breakdown, but not a big breakdown. This was down only 2.5%, but already buying exhaustion. Buying was done from the lows of 8%. So, not the setup that I like to trade. Canara Bank, breakdown. Sundar Technologies, no, breakdown. This is not a setup that I like to trade. Plus, this was high volume, okay, but that's not a big problem. ये वाला लेकिन this is a breakdown. K Fintech, breakdown. Inox Green, breakdown. So अगर if I अगर मेरे को लगता है कि हाँ वेडनेसडे को कोई ऐसा स्टॉक्स तो काफी ऊपर गए थे, मुझे पता है 10% 20% काफी ऊपर ऊपर गए थे, लेकिन मेरे लिए कोई सेटअप था नहीं एज ऑन ट्यूसडे. सो वो सोचूं कि हाँ छूट गया बाजार, या उससे अच्छा क्या है कि वेट फॉर माई सेटअप विच वर्क्स लाइक. मैं आपको दिखाता हूँ क्या सेटअप्स वर्क करते हैं एक्चुअली. जैसे मैं दिखाता हूँ नोवामा, ये मैंने क्रिएट किया था नोवामा. जस्ट लुक एट दिस सेटअप. Stock went up, there's a big buying, see the volumes over here, and then stock went sideways. Here they go sideways. And just before the breakout, just look at the volumes here. Within base, there's no red bar. क्या यहाँ पर कोई रेड बार दिख रहा है बहुत ज्यादा कि हाँ लगे कि sellers are getting trying to take control? When the stock moved up in the base on this over here, तो यहाँ देखोगे आप good volume. And just before, and these days were completely tight. ये completely, ये जितने भी bars है completely इस बार के अंदर है. So all this will be inside bars. And then जब ये सारा सेटअप फॉर्म हो गया, उसके बाद अगर मैं देखता हूँ this is side tight, and this is the way I take breakouts. This is what I like to see. Let's look at second stock which I traded, Cochin Shipyard. Same thing. Stock
In uptrend, stock went sideways, big buying. This is a red day, ये एक रेड डे है, बट इट्स नॉट अ कंसर्न क्योंकि ये ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, इसका हाई ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है ना, और वो भी वेरी हाई वॉल्यूम, एंड देन द स्टॉक वेंट साइडवेज, 3 days sideways, साइडवेज, ये कंप्लीटली एक साइडवेज एक छोटा रेंज में जा चुका, एंड देन देयर इज अ ब्रेकआउट. दिस इज व्हाट आई लाइक टू ट्रेड. एंड जस्ट बिफोर द ब्रेकआउट ये एक इनसाइड बार है, दिस इज अ इनसाइड बार, with a very low volume, and when you buy stocks like this you can get a very good risk reward, and this is how the stock moved after this. This is what I like to trade. So if you like the video, do subscribe to my channel and do comment and do share your feedbacks. Thank you.